Hi guys, welcome back to Class of Planning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about a game of chess. Here's the second part that I promised you in the last class. कि यार 5 part हो गए. The second part अभी आपके लिए है the game of chess from the wasteland. Yes, this section takes a title from the two plays by early 17th century playwright Thomas Middleton, in one of which he moves in a game of the chess denotes the stages in seduction. Stages and seduction. He will be very clear about it. So it's all about seduction from our upper and a lower class. This section focuses on the opposing scenes, one on the high and the other on the lower class. So पहले clear करते हैं high class, then we'll talk about lower class. Yes, it's all seduction. अब यहाँ पे seduction आप किस form में समझते हो? It's all up to you. The first half here, it portrays a wealthy, highly groomed woman surrounded by exquisite furnishings. Yes, definitely हर चीज बहुत ज्यादा furnished. चीजें बहुत आप चीजें नहीं materialistic things. The world is full of materialistic things. Here, as she waits for lover, her narrative thoughts. So narrative thoughts that seriously, you know what's the narrative thoughts. Now to become a frantic, I repeat, meaningless cries. कुछ होता है सब कुछ होने के बाद भी होते हैं बिना मतलब के परेशान है ये वही है जिसका सब कुछ है फिर भी बहुत ज्यादा परेशान है उस थॉट को लेके कि क्या होने वाला है. Here, her day culminates with the plans for an excursion and a game of chess. क्या करेगी कैसे करेगी गेम ऑफ चेस खेलेगी या नहीं खेलेगी ये सब डिफाइन कर रहा है. लाइफ इसकी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है अभी तो पहले कह जाता हूँ दूसरे की कैसी है ये तो हमें पता लगेगा अभी. बट फर्स्ट हाफ किसकी बात करते हैं हम आ गर्ल विद द वेल्थ. First half. Second, now come to the second part. Here we talk about lower class. The section shifts to London Baron, where the two women discuss about the third woman. Normally होता है कि एक दो women जो तीसरी नहीं हो दूसरी की बात करता हूँ तीसरी की दूसरी नहीं एक दोस्ती हो. Between the bartender's repeated calls, hurry up man please, it's time. मतलब आपको दिखाया क्या कुछ भी privacy नहीं है वहाँ bartender चिल्ला रहे हैं बात कर रही हैं and the thought things are going on जो usually होता है the poor fellows. Here, one of the women recounts a conversation with their friend Lil. या एक conversation define कर रही है उनकी friend है Lil जिसके साथ हुई थी. Whose husband had just been discharged from the army. Army से discharge हो छुट्टी हो चुकी उसकी अब. So she had children. Now Lil over her feared to get herself some false teeth. अब यहाँ पहले डिफाइन कर रहे she had children. बेटा दाग क्यों नहीं ठीक करा दी? Why don't you make take care of your teeth? से teeth से उसको टूट गए थे. रीजन क्या था? Due to meditation. से मेडिटेशन वाला नहीं मेडिसिन जहां पे दवाई ली गई. रीजन क्या था? 5th चाइल्ड के बाद 6th चाइल्ड था उसको अबॉर्ट करने से मेडिसिन ली मेडिकेशन की वजह से उसके 30 फॉल कर गए लेकिन इसकी अपीयरेंस पूरी खराब हुई. अब अपीयरेंस खराब हो जो हस्बैंड है उस पर इंटरेस्ट नहीं है उसको. यहाँ उसको बोल रहा है या तो तू अपना फेस और अपनी बॉडी फिगर को ठीक कर और आई गो टू सम अदर वुमन. It says some falsely telling her that her husband will seek out the company of other women if she doesn't improve her appearance. It means that husband doesn't love her, he loves her body. तो वो यार सिलेक्शन तो है डेफिनेटली दो अलग अलग फेजेस में दोनों को डिफाइन कर. आप तो गेम ऑफ चेस को डिफाइन किया ब्लैक और व्हाइट इज ऑल अबाउट गेम ऑफ चेस. सो हियर इज टॉक अबाउट द पुअर एंड रिच. आई होप द कॉन्सेप्ट बीइंग क्लियर.